I am your host Salim bin Mohammad Rafi, and here is your YouTube channel Zamir Universal. Finally, everybody was expecting that Netanyahu, a crazy, a mentally retarded person, will start war with Lebanon, and in spite of the fact the United States of America, Europe, all his even defense minister and the chief of army staff and his own army and his 85% public Palestinian who have their relatives as hostages, they have been asking him that have ceasefire, get out, you had a humiliating defeat by Hamas, and they are still there, challenging you and spitting on your face, although you have destroyed their every home, you have filled their wells with poison and cement, you have cut their electricity power, you have destroyed their hospital, their universities, their mosques, even their shelter homes, and you have stopped water so that you can starve, and you want them to move from east first from north to center, from center to south and to Rafah and back to north and south. And this, has been going on as this shuttlecock thing from one place to the another. Not that as they were human beings, that they were some kind of, herds of cattle. Now, finally, this man, I think, is now in the clutches of Hezbollah. And you see that how they have destroyed their stores where they kept their missiles, their many other army depots, and what they have not done so far is that they have destroyed the Haifa with all their chemical plants, or destroyed their, the rigs where they get the gas and oil, and they can starve them to death. They have done it, and hats off to Houthis. When 2,000 miles away, they dropped their missile, which went directly, it hit, Tel Aviv, and in spite of the fact that they are saying that nothing happened, it destroyed a good part of their infrastructure. And imagine if hundreds of such hypersonic missiles were there, then there would not be a single house standing in Tel Aviv. And I'm sure when the dogs, has to die a miserable death, he goes into a pure and in a sacred mosque, and then the people, the worshippers, just kill him. Netanyahu is that dog, and along with his two, extremists, that midget with a cap on him, then we are, he is a swine, he is a pig. Both, you look at his face, look at his tummy, and I think you will find many similarities between him and Netanyahu, and you find the same thing with the other stupid idiot, that another crazy person. They are all three war criminals. And there is not that I have any sympathy for the defense minister or the chief of army staff. Each one of them have been involved in killing, and they have blood on their hands of women and children. And imagine those, I'm now going to show you what a child left, the all members of the family killed by their dumb bombs. And the criminal and the person who should be now spitted on his face and be destroyed along with it has been his stepfather, which is the United States of America. And war criminal, you can see that how he went in, addressed the both houses, and was clapped. How embarrassing it would be for common American. You listen to what one of the clippings I am putting in it, so for you to see it. I'm also putting that orphan, the little boy, maybe just 1 year old, to see where she should go. There is no one to even take him, because there are no hospitals, there are no orphanage, there is no meals, there is nothing. They're there. See their kids jumping over the biscuit packets, and there. That's what they have created. They have created a nation of animals, pigs, swines, beasts, monsters. So it is about time that they are now going to be killed
one by one in the streets by Houthis. There's going to be street fights in all the cities, and they are not their cities. They are all the scum of the society gathered there. This is the nature's way of avenging. Nature promised them that you will be kept scattered and you will never come home. Zionist movement or no Zionist movements, Balfour or no Balfour, Rothschild family or no Rothschild family, each one of them, Biden or Joe Biden or no Joe Biden, all of these are the facilitators and all will burn into the deepest pits of hell. People will spit on them, history will blacken their face, and without giving you much more this, I am just going to let you see. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसराइल में तमाम की तमाम सिक्योरिटी कमिटमेंट्स मीटिंग्स कैंसिल कर दी गई हैं। इस वक्त आर्मी चीफ वजीर आजम से लेकर सबकी हंगामी मीटिंग जारी है और फौज को मुकम्मल हाई अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि जो काम आज इसराइल ने कर दिया है वो इंसानी तारीख का सबसे बर्बरियत वाला काम था जो आज इन्होंने किया है। और जो अब इस्लामिक कंट्री का नाम आ रहा है जिसने ये काम किया है, आप अंदाजा नहीं कर सकते। सारा खेल खुल गया है और ऐसा ऐसा जो चीजें निकल कर सामने आएंगी वो आप सोच भी नहीं सकते। आप सबको पता है कि आज इसराइल ने जो पेजर डिवाइस होती हैं, ये छोटी छोटी डिवाइस हैं, ये बेसिकली होती है जब हम लोग मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करते थे या पुराने दौर के अंदर ये बड़ा सिक्योर था। रेडियो कम्युनिकेशन के जरिए डिवाइसेस इस्तेमाल की जाती थी और वन वे कम्युनिकेशन होता है, यानी आपने कोई मैसेज दिया किसी को जहाँ मोबाइल सिग्नल नहीं है, रेडियो कम्युनिकेशन के जरिए तो वो उसको मिसाल के तौर पर मैसेज आ जाता था। अब ये लिबनान के अंदर बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल करें, हिजबुल्लाह के लोग इस्तेमाल करें, डॉक्टर्स इस्तेमाल करें, तमाम लोग। अब मोटरोला कंपनी का नाम आ रहा है कि उनसे इन्होंने डिवाइसेस ली थी, लेकिन सबसे बढ़कर हुआ ये है कि इसराइल ने अब जो लिबनान के अंदर सूरत हाल की उसकी कहानी खुलकर सामने आ गई है। हुआ ये है कि ये जो डिवाइसेस थी ये लोगों की जेबों में थी और डिवाइसेस जब फटी, कोई मॉल में था, कोई शॉपिंग कर रहा था, कोई फ्रूट्स ले रहा था, कोई कुछ कर रहा था, इवन के बच्चे मारे गए हैं, इवन के घर वाले मारे गए, कोई ड्राइव कर रहा था, कोई बाइक पे था, कोई कहाँ था, जिस जिस की जेब में डिवाइसेस थी, डॉक्टर्स मारे गए हैं, फायर फाइटर्स मारे गए हैं, वो जख्मी हो गए हैं, जान उनकी पूरी तरह तबाह। खबर ये आ रही है कि 5000 से ज्यादा लोगों इस वक्त शदीद इमरजेंसी की हालत में अस्पताल गए हैं और ये तादाद बढ़ती जा रही है। और कितने मारे गए हैं उसमें से ये नहीं पता, हो सकता है 1000, 1200, 1500 मारे जाए या हो सकता है सारे मारे जाए, क्योंकि इतना तबाह कुन था। किसी का गुर्दा नहीं रहा, किसी का कुछ नहीं रहा, किसी ने अपनी खास तौर पर ऊपर वाली जेब में रखा हुआ था और दिल की साइड पर। ये डिवाइस इतनी ज्यादा अहम होती है कि आपको कोई मैसेज आता है सिक्योर कम्युनिकेशन, क्योंकि आपको पता है कि इसराइल हमले कर रहा है, मोबाइल हैक कर रहा है, तो उसने काम ये किया। जो सबसे अहम बात याद आई है एडवर्ड स्नोडेन को। एडवर्ड स्नोडेन ने ये बात की है, अब आगे चलकर आपको बताएंगे किस इस्लामिक कंट्री का नाम आ रहा है। लिबनान अब जंग छेड़ने वाला है और इसीलिए हाई अलर्ट हो गए। एडवर्ड स्नोडेन आपको पता है कि यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसी में काम करता था और इसने जब अमेरिका का पूरा नेटवर्क बेनकाब किया तो उसके पीछे पड़ गए और वो वहां से भाग गया और अल्टीमेटली ये रूस आ गया। रूस में आकर इसने असाइलम अप्लाई की, पुतिन ने इसको सिटीजनशिप दे दी, अब वो रूसी शहरी है। लेकिन सीन यहाँ पर जो हुआ है वो बड़ा ही हैरानकुन और अजीबोगरीब सीन हुआ है। इस वक्त सीन ये बना है एडवर्ड स्नोडन और बाकी तमाम चीजों को, उसने कहा है कि ये जो इसराइल ने हमला किया है ये साइबर हमला नहीं था। उसने कहा कि जहां से ये डिवाइसेस बनी थी वहां तक इसराइल की एक्सेस थी। मिसाल के तौर पर मोटरोला है या कोई भी कंपनी है, उनको ऑर्डर गया तो उनको का सबसे बड़ा हमला बन गया है। यानी इसमें 5000 से ज्यादा अब लोगों का आ रहा है, हो सकता है उसमें कोई 2500-3000। आपको बताएं कब आखिरी आपको याद है हमला जिसमें इतने हजार लोग मारे गए हों? यानी हमला तो वैसे इसराइल ने बर्बरियत की इंतहा की है। और इस सूरत हाल में आप ये सोचें कि हमने दूसरों को क्या बात करनी है, इसराइल की मदद के लिए जॉर्डन आगे आ जाता है। यानी आप अंदाजा कर लें कि ये तब हुआ है जब अमेरिका का इन्वॉय गया है और उसने कहा है कि तुमने जंग नहीं छेड़नी, पूरे रीजन में फैल जाएगी। उसने कहा ठीक है हम ये करते हैं। और आप ये देखें कि इस वक्त नेतन्याहू फारिग करने जा रहे हैं आर्मी चीफ को, वो फारिग करने जा रहा है डिफेंस मिनिस्टर को और अपना आर्मी चीफ और तमाम चीजें लेकर आ रहे हैं कि हमने जंग करनी है। अब वो इस बात की परवाह नहीं कर रहे कि कोई बच्चा मारा गया है, कोई बूढ़ा मारा गया है, कोई कैशियर मारा गया है। वो इंसानी तारीख के दरिंदे हैं, वो इंसान को नोच डालना चाहते हैं। अपने अलावा सबको समझते हैं कि इनका दुनिया पर रहने का हक ही कोई नहीं है।
अब आप अंदाजा कर ले कि सारी सूरत हाल में क्या आज के बाद दुनिया को पता है कौन सा मोबाइल फोन आप इस्तेमाल करें वो कहां से आया है, वो कंप्रोमाइज नहीं हुआ हुआ। यानी ये आप सोच रहे इंसानी तारीख है, इससे बदतरीन कोई मरहला लम्हा आप सोच सकते हैं होगा? ये सबसे बढ़कर तारीख का बदतरीन हमला था और इसमें आम डॉक्टर से लेकर सिविलियन को, बेचारा दुकानदार है, किसी ने अपने कारोबार के लिए लिया हुआ है, वो सिविलियन हो, सब मारे गए हैं उसमें और बहुत सारे उसमें जख्मी और ऐसे जख्मी हैं कि जो परमानेंटली डिसेबल हैं। यानी आप ये सोचो बहुत सारे लोगों की उंगलियां ही खत्म हो गई हैं, हाथ ही कट गया पूरा। आप बताया आपने उसके साथ क्या करना है? किसी की आंख खत्म हो गई है, किसी का दिल यानी गुर्दे तबाह हो गए हैं। पूरी तरह तारीख का बदतरीन हमला था जो इजराइल ने किया। और अब उन्होंने क्या किया कि जी सिक्योरिटी हमारी मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट हो गई। अब सिक्योरिटी हाई अलर्ट हो गई है इनकी, यानी आप अंदाजा कर ले कि जी हम पर लिबनान हमला करने के लिए जा रहा है। ये असल में तैयार बैठे हुए थे हमको ऐसा हमला करें जिससे, आप सोचो लिबनान के मुख्तलिफ शहरों में इमरजेंसी नाफिज है, हस्पतालों में लोग गए हुए, तो इन्होंने काम करना। अब ये करने जा रहे हैं जंग। इनको पता था कि ईरान में हमने जाकर इस्माइल हानिया को मारा है, तो वो זה בסדר לירוק על נוצרים. האם זה בסדר? מצד מה? האם מבחינת התורה? לך, כאילו. אז מה ככה. אתה אומר? אם הם עובדי עבודה זרה, אז אנחנו צריכים למוס בהם ולשקט אותם ולרמוס אותם ובעיקרון גם להרוג אותם, כי הרי גוי חייב בשבע מצוות בני נוח, ואם הוא לא מקיים את זה צריך להרוג אותו. אבל... אתה תהרוג מישהו? אם הייתי יכול הייתי מאוד שמח לעשות את זה, אבל אין לנו בית דין, אז אנחנו לא יכולים לעשות את זה. אוקיי. אבל האם לירוק עליהם, אז ככה, זה יכול לגרום גם לעבירה שקוראים לה חילול השם, ואם אין לזה תועלת, אז אין עניין לעשות את זה, אבל אם היה לזה תועלת כלשהי, שזה היה מפחית את העבודה הזרה בעולם, ודאי שהיה בזה עניין גדול. אז זה שמישהו מאמין בישו ונצרות וזה, זה... אז צריך להרוג אותו. בינתיים, אוקיי, אבל אין בית דין. אז לא עושים את זה. אז זה בסדר לירוק על מישהו כזה? אמרתי, אם זה גורם תועלת, אז כן, אם לא, אז לא. תסביר תועלת. להסביר תועלת, אם הוא יפסיק לעבוד בגלל זה עבודה זרה, אם הוא יתרחק מהעניין. אבל זה אמונה של מישהו אחר. זה אמונה שמישהו מאמין בה, צריך להרוג אותו. מי שמאמין שהאלוהים שלי הוא חלק מאיש, אז צריך להרוג אותו. מי שמזלזל באלוהים שלי, אז אני אהרוג אותו. אז זה לא, אבל זה תפקיד שלכם, להרוג או לרעוק, זה לא התפקיד של אלוקים? לא, השם אומר לנו מה לעשות. הוא אומר, זה כתוב, להרוג? איפה? איפה כתוב? היהדות תפקידה בעולם זה לעשות טוב, לגרום שהעולם יהיה נקי. כן. אז כל בן אדם שיאמין באיזה בן זונה אחד. אבל איפה זה כתוב? אבל איפה זה כתוב? איפה זה כתוב? בגמרא. אתה רוצה להביא גמרא? אנחנו יכולים להביא גמרא ולראות. אבל הגמרא זה כתוב על ידי אנשים, לא על ידי... על ידי אנשים שהקדוש ברוך הוא שלח. חכמים שכתוב בתורה של להקשיב להם. אנחנו מטילים מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים. Yesterday we saw again Russia's targeted attacks against civilian infrastructure, targeted attacks on civilian infrastructure with the clear aim to cut off men, women, children of water, electricity and heating. With the winter coming, these are acts of pure terror, and we have to call it as such. Yesterday we saw again Russia's targeted attacks against civilian infrastructure, targeted attacks on civilian infrastructure with the clear aim to cut off men, women, children of water, electricity and heating. With the winter coming, these are acts of pure terror, and we have to call it as such. Yesterday
Often when there is dissent expressed in the United States against policies of the Israeli government, people here are called anti-Semitic. What is your response to that as an Israeli Jew? Well, it's a trick. We always use it. When from Europe somebody is criticizing Israel, then we bring up the Holocaust. When in this country people are criticizing Israel, then there are anti-Semitic. And the organization is strong and has a lot of money, and the ties between Israel and the American Jewish establishment are very strong, and they are strong in this country. As you know, they have power, which it's okay. They are talented people, and they have power, money, and media, and other things. And their attitude is Israel, my country, right or wrong, the identification. And they are not ready to hear criticism. And it's very easy to blame people who criticize certain acts of the Israeli government as anti-Semitics, and to bring up the Holocaust and the suffering of the Jewish people, and that justify everything we do to the Palestinians. Clapping and, standing ovations and whatnot. Well, that's the power of the Israel lobby, AIPAC in particular. So our Congress is bought and paid for and has been for decades. Biden, by the way, took more money from the Israel lobby than any other Senate candidate. I think he still holds that record, and he hasn't been in the Senate for, I guess, 12 years. 8 years as a vice president and more than that, and then almost 4 years as president. So, yeah, they're bought and paid for, and they were cheering their major funder, in essence, or the Israeli prime minister, who their major funder has long supported. AIPAC, by the way, has a very strong political orientation. I know because I covered the election between Rabin and Netanyahu, and AIPAC funded and supported Netanyahu through PACs and advisors and everything else. So there's long been a political orientation, especially after Oslo, and Netanyahu is hand in glove with the Israel lobby. He's a creation of the Israel lobby, really, in essence, as a political candidate. And the deep pockets that the Israel lobby has allows it to essentially buy up the American political class. And so that's why you saw everybody standing and cheering a war criminal. I mean, it was a kind of deeply embarrassing and sobering sight. But I think it also illustrates to what an extent the United States has become a pariah, along with Israel. The fact that you would invite someone who is being investigated as a war criminal. It's not just a term I'm throwing out. He's being investigated by the International Court of Justice as a war criminal. So that they would invite him, it just shows you how checked out both Israel and the United States have become from the global community. टारगेट उन्होंने कोई डिफरेंट रखा हुआ था. अब नेक्स्ट जो होगा वो इससे भी ज्यादा, यानी आप सोचे 11 मिनट हो सकता है अगला 5 मिनट के अंदर हो. सिर्फ 11 मिनट के अंदर उन्होंने तेल अवीव में जाकर इसको हिट कर दिया है. तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना ट्रैवल करके वो गया और रास्ते में कितने डिफेंस सिस्टम थे. अब नेतन्याहू ने क्या बयान दिया? नेतन्याहू ने कहा कि तुमने रेड लाइन क्रॉस कर दी है, अब तैयार रहना, मेरी एयरफोर्स के जेट आ रहे हैं और तुम पर हमला करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है. नेतन्याहू ने एयरफोर्स को हुक्म दिया है कि यमन पर स्ट्राइक कर दे. अब वो स्ट्राइक इसी वक्त करना है, बाद में करना है, ये इनको कुछ नहीं पता. लेकिन एक बात तय हो गई है कि आज इजराइल की तारीख के अंदर सबसे बड़ा जो भयानक यानी मरहला था, उसमें अब अमेरिका भी इनको नहीं बचा पाएगा, ना फ्रांस बचा पाएगा, ना इजराइल के अपने डिफेंस सिस्टम बचा पाएंगे. अब आप ये सोचें कि वो बात ही खत्म हो गई है, जी तो मेरी एयर स्पेस इस्तेमाल ना कर, वो जी फलानी की एयर स्पेस इस्तेमाल करेंगे तो ये हो जाएगा. उन्होंने कहा कि हम किसी के बाप से भी नहीं डरते, ये लोग कर लिया इस्तेमाल, रोकोगे तो पता चलेगा ना. जितनी देर में तुम्हें पता चलेगा कि कोई मिसाइल यहाँ से गुजरा है, उतनी देर में हम हिट करके क्लियर भी हो चुके होंगे. अब यमन इस सारी सूरत हाल के अंदर उन्होंने हाई अलर्ट जारी कर दिया है. उन्होंने अपने पूरे यमन को हाई अलर्ट कर दिया है. जाहिर सी बात है इजराइल ने हमला करना है, अमेरिका ने भी हमला करना है. अमेरिका हो सकता ना करे, ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अमेरिका के निकले हुए पैरों तले जमीन के क्या मसला है. ऊपर से मिसाइल आकर हिट हुआ है, हमारे यहाँ पर एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं बचा पाया. आप ये सोचें न जाने कितनी लेयर्स को वो रोंदता हुआ चला गया है, और अभी तो ये 20 साल पुरानी टेक्नोलॉजी थी. तो आप अंदाजा कर लें कि बाकी सूरत हाल क्या होगी. देखिए, उर्दन के किंग ने इस वक्त इजराइल के साथ मामला तय करे, वो बातचीत कर रहे हैं. वहां पर भी इजराइल उनसे इंफॉर्मेशन ले रहा है कि यहाँ पर आपने हमें बचाया नहीं,
आप ये सोचें कि बड़ी अजीब बात है कि जो अमेरिका और फ्रांस के डिफेंस सिस्टम थे उनको मौका ही नहीं मिल सका कि आपको मिसाइल हिट करे। ये कैसी अजीबोगरीब सूरत हाल है। हाँ, ये उनको जरूर पता चला है कि कोई चीज गुजरी है, तो वहां से इसराइल अलर्ट हुआ और इसराइल ने भी हवा के अंदर तीर चला दिए। वो रोक नहीं पाए उसको और बड़ी तबाही हुई है इनके यहाँ। इनकी हमेशा से एक ही आदत है, वो जी हमारे 9 बंदे जख्मी हुए हैं। या आप अंदाजा कर सकते हैं कि इसराइल में तबाही का लेवल ये है कि 20 लाख लोग शेल्टर के नीचे चले गए हैं। कयामत खेज रात थी इसराइल के लिए, कयामत खेज रात, कल की भी और आज का दिन भी उनके लिए कयामत खेज था। आप सोचें कि कल लिबनान ने इनके साथ जो बुरा हाल किया और आज जो इन्होंने इनके साथ बुरा हाल किया। अब जो सबसे अहम बात है कि इन्होंने इसके ऊपर वो वारहेड वो चीजें नहीं लगाई कि यानी जिन्होंने जाकर तबाही करनी थी। आप 1 मिनट के लिए, सिर्फ अब 1 मिनट के लिए सोचें, मिसाल ले लें कि ईरान एटमी ताकत बन चुका है और ईरान के पास न्यूक्लियर वारहेड भी है और ईरान के अमेरिका ने जो कहा है ना, इजराइल ने भी कहा है कि भाई वो बना चुके हैं। अब यही मिसाइल, जाहिर सी बात है, इसके ऊपर आपने न्यूक्लियर वारहेड लगा लिया। अब आप 1 मिनट के लिए समझे इस बात को, सारे डिफेंस सिस्टम फेल हो गए। आपने ये मिसाइल फायर किया, सीधा तेल अवीव में जाकर हिट किया और उस पर न्यूक्लियर वारहेड था। आप बताएं पूरे का पूरा शहर तबाह हुआ कि नहीं? यानी अब आप बताएं इस सारी सूरत हाल में कि शहर इनका सलामत रहेगा? दुनिया का कोई मुल्क जुर्रत नहीं कर सकता इजराइल पर हमला करने। उनको पता है ये पूरी दुनिया इनके साथ खड़ी है, लेकिन एक ऐसा मुल्क। यूनिवर्सल टेलीविजन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसके बाद बेल बटन पे क्लिक करें और अपने कमेंट्स के सेक्शन में अपने कीमती जो ख्यालात का इजहार जरूर